today we are going to start chapter number 7. Which is the kinetic theory of plasma waves. So previously we have done fluid theory. As I've mentioned earlier, fluid theory is the simplest description of plasma, in which we have used average quantities as we have already discussed before that in fluid theory we consider you can say a box in which we calculate all the we consider that there is a box in which you have considered a certain number of particles and apply all the calculations on this volume element and average out all the quantities and consider that the plasma is made up of all similar kind of, or you can say we use ensemble approach, that we have made an ensemble and we have made all the calculation on this ensemble and then calculate the average quantities in the fluid theory. So mostly this approximation is accurate for majority of plasma phenomena. But there are certain situations in which this fluid theory is not adequate, or you can say it's not appropriate to explain certain observed phenomena or some observed observations. It failed in explaining some of the very important you can say aspects of plasma. So for that case, we use kinetic theory, in which we need to consider the velocity distribution functions. So we, instead of using fluid theory, we use kinetic theory, where we have used a distribution of the velocities of particles, where f of v is distribution. Distribution function. In fluid theory, we usually consider Maxwellian distribution, but we see that in many cases the distribution is not Maxwellian. We are far from Maxwellian distribution. There are many phenomena in which you can think of high energy distribution particles. Okay, I'm going to draw one of the that usually that we have considered that this is kind of a Maxwellian structure. That we have distribution of particles, distribution here, and we have
velocity. So this what we have already discussed in chapter 1, where we discussed temperature. Such kind of distribution is characterized by quantity, and this is the width of this distribution is the temperature of the plasma. So instead of distribution, we used temperature to denote the Maxwellian distribution in fluid theory. So most of the particles remain in this region with the you can say zero velocity. There are very small particles that are with a high velocity. So this is basically the Maxwellian distribution that we usually use in fluid theory. But if you consider that okay, I'm going to show you a picture from the book where you can easily find out the difference between the distribution and sorry, I have not opened it yet, and I'm just give me a minute. I will show you the diagram. Okay, now you can see there are two different distributions. This F1 V of x and F2 V of x. These two distributions are different, and their behavior will be totally different. But the fluid theory cannot distinguish between these two distributions unless and until the area under the curve is same. Area under the curve will give you the total number of particles. So if you try to find out the density, which is a function of R and T, then you have to integrate this distribution, which is a function of R, V, and T in dV, then you will get the total number of particles. So if the total number of particles is same for both of these quantities, F1 and F2, then the fluid theory cannot distinguish between these two distributions. So this is the main reason of using the kinetic theory. So in fluid theory, the dependent variables are a function of these four variables: x, y, z, and t. Just like you can see here, the density is a function of this R is generally x, y, and z, and t. So the dependent variables are function of these quantities. And the distribution is taken as Maxwellian. So we have another parameter, which is the temperature, that will
um, that is required for to discuss the fluid theory. But now in kinetic theory, the velocity distribution, this F is a function of R, V, and T. So 3 space variables, 3 velocity components, and 1 T, means 7 independent variables. So you can see that we have increased the number of independent variables to define our system. So you can say that kinetic theory is more accurate than the fluid theory, because it will cater all the important terms, or all the important variables that are left by the fluid theory. So what actually means by F, R, V, and T? So it basically gives us the number of particles per meter cube at position R and T, with velocity components between Vx and Vx plus dVx if you are considering a 3-dimensional. So here you can see this portion. And here at the same position, I can draw the this, and this will give me this number. So this is basically giving me the number of particles per meter cube at R and T with the velocity between Vx and Vx plus dVx. So I am going to write it in this way: F of at position X, Y, Z, and T with the velocity you can have Vx, Vy, Vz, and then dVx, Y, and dVz. So here I am considering only one directional distribution, so only dVx will come, and similarly here we have X, Y, Z, and T, and with Vx. So but for a journal 3-dimensional distribution, we have variation in Vx, variation in Vy, and variation in Vz. That's a journal distribution. In the pictures that I can you can see that at this point and this point there's a difference in the number of particles. Similarly, you can see that up to here that you have a different number of particles here. So these distributions are different. So the total the number density at a position R and T can be found by integrating this function. So we can write it in this form. And dVz F, R, V, and T. So there are different ways in which you can write this this quantity, which is basically giving you the total number of particles or the number density. So we can write it in this way: minus infinity to infinity and you can write it d3v, or the volume element, or you can, or here the denotation, can say the terminology that we are going to use here is that I can write it minus infinity to 1 + 2 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻
dV, where dV is the volume element. So how this is how you can integrate this quantity, and you can find the density of the particles. Where now there is another thing that we usually use with this distribution, as we have done in the first chapter, where we calculate the temperature or the average energy, and we have integrated this quantity, and uh, that I give you certain you can say assignments to find out the normalization factor. So if f is normalized, means minus infinity to infinity f of r v t dv equals 1. So that means my function is normalized, and we denote it with the cap. So f cap is a normalized distribution. So from here you can see that usually, as this is giving you the probability of finding the particles in a certain interval, so we deal this quantity as probability. So the sum of all probabilities is equal to 1. So we considered is this normalized distribution. So we can also call it is a probability. Usually the most important distribution that we usually talked about is the Maxwellian distribution. So if I write a Maxwellian distribution, it will be something like that. But this is it is not normalized. So when we normalized it by using this condition, then we came to know that the normalized distribution will be normalized Maxwellian distribution will be so this will be a normalized distribution that upon integrating you will get one of this, and this one is okay. Now you can easily verify that this A is this one, or you can consider it as an exercise that you will find out this A, or you can I will write it here.
find A. So as an exercise, you can find A by integrating this function. Okay. Now, the average quantities we can define in by using this distribution. So average, any quantity that you want to find out and its average value, you can do it by using this distribution. So average magnitude of velocity we can find out. You can write it in this form, or usually it is written as V. So V average is V multiplied it with the normalized distribution. Now make sure that you have used the normalized distribution here instead of not normalized, non-normalized function. And P3. So if I use this normalized distribution here and try to solve this term, and then I will get. Let me write it down for you. M over two. So here you can see that the distribution that I am using, this F, is isotropic. Isotropic means that it is same in all directions or same for all quantities. It is independent of Vx, Vy, or Vz. So that's why we call we can use the spherical coordinates. So or you can I will write it for you. Since F is isotropic, so we can use spherical coordinates. As you know, spherical coordinates are isotropic. You have anisotropic distribution, or you can have the coordinates that depict anisotropy is the cylindrical coordinates, where you have a different you can say values of Vx and Vy. But here, if we use spherical coordinates, you have the same Vx and Vy. So we are going to use spherical coordinates. It will depend on the distribution, that which volume element that you are going to take. So as I'm using spherical coordinates, so we can write this volume element T3V as 4 pi V square TV. You remember that if you see some books where they have deal with the coordinate system, that we have that we get different volume elements for different coordinate system. Usually in spherical coordinates we have
r, theta, and phi. So in our case, as we are dealing with the velocity dimensions, so instead of r we have v, and we have usual theta and phi. So from theta and phi you will get this 4 pi, because upon integrating theta you will get 2, and upon integrating phi you will get 2 pi, and that will contribute as 4 pi, and then we have v square dv. So this 4 pi is coming from the integration of theta and phi. So here I am going to, now the only thing that is left is v. So we have 0 to infinity v exponential minus v square by v thermal square, and then 4 pi v square dv. So this is how you can integrate this quantity. So I am going to define another variable. Let just to solve this quantity, let y equals v over v thermal, then dy equals dv by v thermal, or you can say the dv equals v thermal dy. And now substituting this quantity here, we will get so I am defining v thermal as 2 kBT by m. This is my v thermal square. So from here you can see that I have already v thermal cube. So I am taking it outside as okay. 1 over pi t by 2, and we have 1 over v thermal square over 3 by 2, and then we have v1 from here, v square, and there's a v that we are going to take it from here. So we'll get 4 pi v thermal 4, 0 to infinity pi cube exponential minus y square dy. So this is the integral that I'm left with. These are all quantity. Now this integral, as you people already knew, there's a certain values assigned to such kind of integrals. So this integral give you value of 1 by 2. So from here you can write 1 by 2. This integral will be solved as this one. So now the average quantity of the velocity will be, from here you can see v thermal 4, and you have v thermal cube, and we have v thermal here, and similarly we have 2 cancelled with this, and we have 2 here and 2 pi minus 1 by 2 and v thermal, or you can say we have 2 and
kbt by pi m 1/2. So that will be my average velocity. We can also find out the velocity component in a single direction, say Vx. So we can also find out okay. You can also find out Vx average value, and we can do it by integrating this quantity Vx and f of v eq v. So if we find out this one, then we have to take this d3v as dvy dvz. I'm going to show you here. We have to write this vx, vy, vz, and instead of d3v, we have to write dvx, dvy, and dvc. Okay. I'm going to, oh my God. Okay. So if I want to calculate this Vx average, then m by 0 to infinity, I will write dvy exponential minus vy square by v thermal square. Similarly, I can write for dvz exponential minus vz square by v thermal square, and then I can write 0 to infinity. Oh, sorry. Here I have to write minus infinity to infinity. Here I'm going to write minus infinity to, and 0 to infinity 2 times Vx exponential minus Vx square by V thermal square dvx. Now it's a something that I will tell you that if you take Vx average, that is going to be 0. But
we are taking the average value of this modulus. So that modulus means that we have cancelled out the direction effect, that we have, that for positive value we'll take it positive, and for negative value we will, as you know, that this mod quantity, or generally I can write this mod x means plus minus x. So that's why I have taken 0 to infinity and 2 times, because it will be if minus infinity to infinity, but I have replaced it with from 0 2 times 0 to infinity. So when you solve this term, this integral and this integral, they both give you the value of, if you solve it, it will be under root pi and v thermal. Similarly, this will be under root pi v thermal. So this is an integral that we are looking for. So this again, we have a situation that we have an integral like that, y exponential minus y square dy 0 to infinity. So this is equals to if I substitute all these values, that will okay, I can solve it to find out the exact value in Mathematica. If I solve it in Mathematica, what I will get. Now I'm showing you the Mathematica file so that you can easily see. So I'm 0 to infinity. Let's take y exponential minus y square dy. So let's see what it will give me. Y exponential minus y square, that will give me 1/2. So this is the quantity that I'm going to, as previously I have used another integral, which is y square exponential, or you can write it again we have used y cube exponential minus y square, but we have here minus infinity. So y cube exponential minus y square. Okay, now this is again from 0 to infinity. This is again 1/2. So y exponential minus y square, or y cube exponential minus y square, that is giving me 1/2. So
where is my let me show you. So this exponential integral will give me 1/2, and then finally I can write that my Vx is 2 kb t by m pi m 1/2. So you can see that the Vx average value is different from the average value, and similarly you can find out some other average quantities in this. You can find out Vy average value. You can also try to find out the Vx average value. Vx average value instead of taking these plus minus quantities. This will give you 0. You can check it by integrating this function with Vx. So you can see that as this is an isotropic distribution, so we have Vx average goes to 0, but this Vx average modulus is not going to 0. Is there any question? No, sir. No, sir. Okay, then I'm Maria आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा. सर ये जब हम नॉर्मलाइज फंक्शन यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन और ये एवरेज वैल्यूज इससे फाइंड हो रही हैं. इसके अलावा भी इसके कोई इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं? नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के यस सर, ये जो यस सर नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के. देखिए नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी उसका बेसिक मकसद यही होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम प्रोबेबिलिटी के तौर पर डील कर सकें. ये इसको हम प्रॉपरली कहते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो इससे जब आप डील करते हैं तो आपको ज़्यादा इजी रहता है कुछ क्वांटिटीज़ को बताना. जैसे मतलब आप थर्मोडायनेमिक्स में जैसे जिस तरीके से आप करते हैं, आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को लेके चलते हैं, तो हम यूजुअली नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं ताकि उसको हम डील कर सकें एज अ प्रोबेबिलिटी. सो अब मैं यहाँ पर आपको बस बिल्कुल तो तकरीबन टाइम क्लोजिंग है, तो मैं आपको सिंपल इक्वेशन लिख के दूंगा जो कि काइनेटिक थ्योरी की है. ये काइनेटिक थ्योरी जिस तरीके से हमने देखा कि आप फ्लूइड मॉडल में जब आप यूज करते हैं तो आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. तो काइनेटिक थ्योरी में हम क्या यूज करते हैं? जो बेसिक इक्वेशन है काइनेटिक थ्योरी की वो कहलाती है बोल्ट्जमैन इक्वेशन, जो कि डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ. सो पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है. बोल्ट्जमैन इक्वेशन
जिसको बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसने उसको सेटिस्फाई करना होता है। सो हमारे पास जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है वो ये है। जिसमें ये कैपिटल एफ जो है कोई भी आपके सिस्टम में जो फोर्स मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये राइट साइड पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कुलियंस। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ड्यू टू कुलिजन्स। ठीक है, सो जो आपके पास बेसिकली ये पार्शल बाय पार्शल वी लिखा है, ये है पार्शल बाय पार्शल वी एक्स ये इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको समझना बहुत आसान है कि अगर आप ये ज़हन में रखें, ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन को अगर आप समझना चाहें तो इजी चीज ये है कि आपके पास जो एफ है वो बेसिकली फंक्शन है आर वी और टी का। तो अगर आपके पास आप लेना चाहें टोटल डेरिवेटिव डी एफ बाय डी टी, ठीक है, तो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं। तो बाय चेन रूल आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं कि एफ बेसिकली फंक्शन है एक्स वाई z vx vy vz और t का। सो यू हैव दीज 7 वेरिएबल्स। तो जब आप df बाई dt की बात करते हैं तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँगा कि बाय चेन रूल मैं ये ले रहा हूँगा, फिर मेरे पास ये वेरिएबल है। सो आई एम गोइंग टू राइट पार्शल f बाय पार्शल x और पार्शल x बाय पार्शल t। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगा तमाम वेरिएबल्स के साथ, प्लस पार्शल f पार्शल z बाय पार्शल t। फिर मेरे पास बाकी है vx vy vz। सो मैं यहाँ पर पार्शल f पार्शल vx बाय पार्शल t। partial f by partial vz and partial vz by partial t। तब आप ये देख सकते हैं कि ये 7 कंपोनेंट्स ये आपके पास बन रहे हैं। और अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, ये पार्शल x बाय पार्शल t मुझे देगा वेलोसिटी कंपोनेंट, इसी तरह ये भी वेलोसिटी कंपोनेंट, ये भी वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो पहली तीन ये वाली जो क्वांटिटीज हैं, ये वाली, that is giving me basically v dot grad of f। आप देख सकते हैं कि ये पार्शल x बाय पार्शल t और ये पार्शल बाय पार्शल x आपका ग्रेड है। तो यहाँ पर बल्कि मैं लिख दूं कि जो ग्रेड है बेसिकली वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, पार्शल बाय पार्शल x पार्शल बाय पार्शल y एंड पार्शल बाय पार्शल z। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये मुझे ये क्वांटिटी दे रही हैं।
बाकी ये जो 3 क्वांटिटीज हैं इसमें आप देखेंगे ये पार्शल बाय पार्शल Vx, तो ये बेसिकली होगा पार्शल F बाय पार्शल V, और पार्शल Vx बाय पार्शल T ये आपको दे देगा A। सो दिस इज एक्सेलरेशन, और यहाँ पर आपके पास ये ग्रेड ऑफ F बाय ग्रेड ऑफ V, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है अक्सर जगहों पर as grad V। सो ये जो आपके पास क्वांटिटीज हैं ये दी। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास टर्म है बेसिकली ये है टी एफ बाय टी टी, ठीक है। तो ये आपको याद होगा हमने कन्वेक्टिव डेरिवेटिव की एक टर्म यूज की थी, तो ये बेसिकली वो कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है जिसको हम लिख रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ कोलिजन्स, अगर आप यहाँ देखें अगर आप यहाँ पर सो डी एफ बाय डी टी इक्वल 0 in absence of collisions। सो बेसिकली जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है वो ये कह रही है कि आपका जो सिस्टम है उसमें अगर आप कोलिजन्स को कंसिडर ना करें तो आपके पास जो डी एफ बाई डी टी है वो 0 होगा। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट बनाता हूं जिसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब ये मूव करेगा इन स्पेस एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के साथ यूज करेगा, और एक नई पोजीशन और नए टाइम के पर पहुंचेगा, तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोलिजन्स ना हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कोलिजन, अगर कोलिजन्स होंगी तो डेफिनेटली कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये विद स्पेस एंड टाइम जब मूव करता हुआ जाएगा सो इट्स गोइंग टू चेंज। ये जो वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो बेसिक ये आपका मकसद है बोल्ट्जमैन इक्वेशन का। तो यूजुअली हम सफिशिएंटली हॉट प्लाज्मा में कोलिजन्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, और अगर आपके पास दो चीजें हैं कि आपके पास सफिशिएंटली हॉट प्लाज्मा और हॉट प्लाज्मा से हमारी मुराद ये भी है कि आपके पास जो डेंसिटी है वो लो है। तो लो डेंसिटी हॉट प्लाज्मा, इसको अगर आप कंसिडर करें तो, और उसके अलावा जो आपकी फोर्स F है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को अगर आप काउंट करें तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन है पार्शल F बाय पार्शल T V डॉट ग्रेड F और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का
टर्म लिख रहा हूं, E प्लस V क्रॉस B डॉट पार्शल F बाय पार्शल B, तो ये कहलाती है लॉस ऑफ इक्वेशन। सफिशिएंटली हॉट प्लाज्मा मींस के आपने कोलिजन्स को इग्नोर किया है, कोलिजन्स को निग्लेक्ट किया है, can be neglected. So if you neglect the collisions and you take only the electromagnetic forces, then this Boltzmann equation will become a Vlasov equation, which we usually use in kinetic theory. अब यहाँ पर आप different distributions को use करके आप इसको usually हम पहले क्या करते हैं कि हम इसका जर्नल एक्सप्रेशन बनाते हैं, नॉर्मल इसके साथ फिर हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जिसमें E और B इन्वॉल्व होंगे। तो Vlasov इक्वेशन अलोंग विद द मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है प्लाज्मा की जिसको हम यूज करते हैं काइनेटिक मॉडल। जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है कि यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वजह बता देंगे क्यों नहीं इफेक्ट करती यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ये? देखिए ये इनकॉर्पोरेट होगा जब आप जो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब नहीं है। जो इसका परटर्ब डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी अगेन प्लाज्मा के इनसाइड से जनरेट होती है। ठीक है, जो आपके पास अभी मैं नेक्स्ट टाइम इसको करवाऊंगा, जो आपके पास इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर डिपेंडेंस होगी, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जीरोथ ऑर्डर सॉल्व करेंगे तो जीरोथ ऑर्डर में आपके पास एफ नॉट जो है वो बी नॉट के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होगी। लेकिन यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो आपके पास जिस तरीके से मैं आपको ये बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूशंस डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने आपसे पहले बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है पार्टिकल्स की वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स हैं वो आते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। जब आपके पास आप सिस्टम की एवोल्यूशन को देखेंगे तो फिर वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परटर्ब्ड होगा F1, उसमें आपके पास E1 और B1 के फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और F1 जो है वो डिपेंड कर रहा होगा E1 और B1 के ऊपर। ठीक है सर। Anyone else?